Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody who's listening. My name is Mahmood Maksood, and just like you all, I am a pharmacist as well as by profession. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दूंगी एंड एज अ फार्माकॉन जिस तरीके से हमने ग्रुप को स्टार्ट किया है जस्ट टू फैसिलिटेट ऑल आर फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम फार्मेसी फार्म डी जिन जिन ने किया है एंड दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स not just in industry but in hospital clinical and to understand how it is to work in the pharmaceutical industry and how do we regulate this industry, how do this industry run, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या करते हैं, बेसिकली इंडस्ट्री का क्या रोल है, बीइंग फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल है, ये सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एंड आई होप थ्रू दिस सेशन आप लोगों की जो एम्बिग्विटीज़ हैं, क्वेरीज हैं, वो हम एड्रेस कर सकेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती चलूँ। जैसे मैंने आपको बताया, माय नेम इज़ मानू मकसूद एंड आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। I did my PharmD from Jowdi University back in 2015. उसके बाद I got a chance to work with a pharmaceutical company named Bosch Pharmaceuticals, which I joined as quality assurance officer. Right after that, I got an opportunity to work in OBS Pakistan Private Limited in Regulatory Affairs Department. And since then, my journey with regulatory affairs, pharmacovigilance, business development started. So it has been over 8 years and above that I am working with pharmaceutical industry. Currently, I am employed at Barrett Hodgson Pakistan Private Limited, and I'm leading regulatory affairs and medical affairs department there. थोड़ा सा अपना academics और मैंने explore किया और back in 2020 I was able to complete my MBA from IOBM University. After that, since I was always passionate about teaching and spreading the knowledge that I have, sharing my experiences, that which I am doing right now as well, I opt to teach the students, and therefore I got a chance to work as visiting faculty at two of the renowned universities of Pakistan. Currently, I am teaching at Beria University and IOBM University. So from Beria University, I am teaching two courses: regulatory affairs and business development. And in IOBM, I'm teaching marketing courses. So why marketing? Why am I teaching marketing? How did I get a chance to teach marketing? Since I did my MBA in marketing. So through this entire session, I'll be telling you the diversity that I have in my career and how can this diversity help you as well in achieving your goals. So starting off, let me just give you a small intro of Pharmakon. I have been taking interviews, recruiting youngsters just like you, fresh graduates of pharmacy, and I come across a lot of questions. I come across a lot of confused souls, in fact, who ask me how to start my career, how what to do, what not to do, which department to pick, which department is right for me, because we see a lot of people switching from one department to another in the mid of their career, which at times becomes very difficult, and it becomes a very even the recruiter at times they think that you're not serious with your job. So Pharmakon is a platform through which we will try to bring the insights of the industry. We will explain what is the right decision to make. We will tell you how to make those decisions. Definitely, the last decision is always yours, but we will try our best to let you make an informed decision. I have my team at Pharmakon. As we have already introduced ourselves, we have Talha Ahmed, who is a part of Pharmakon, and Miss Fabiha Mazhar as well. And we will try our best to bring the best of the knowledge of the industry and the other information that you require in order to get the right job for yourself. So
That's a bit about Pharmakon. इसके अलावा we shall be sharing with you the insights, the current affairs, and the all the other information that you require in order to get the best job in the industry. इसके अलावा, as we have already mentioned, that we will try to provide you with specific courses as well. So these courses will be department specific, and we will try our best to cover the best of all the departments, convey the best knowledge that is there for you to understand what to do and what not to do. We will be inviting industries experts. We'll be inviting guest speakers so that ना सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि the people who are working currently on senior positions, they will be sharing their insights, they will be sharing their experiences so that you do not feel left out, or you do not feel that you're the only one struggling. So I know it's very difficult, it's very again, being a fresh graduate right now, you must be thinking कि यार घर बैठ के क्या करेंगे, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए. If I share my experience, I had to wait for 5 months after I graduated to find one job. So सबसे पहले, first and foremost, मैं आप सबसे being young grads, I want to inform you that it is perfectly fine to wait for the right position and the right post and the right department to pick you. Because if you have this mentality of बस इंडस्ट्री में घुसना है, कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए फिर बाद में देखेंगे, such decisions at times ruin your entire career path. सो ये एक चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन आई, व्हेन आई रिक्रूट स्टूडेंट्स, आई टेक इंटरव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज वन mentality that they bring to the recruiter, which do not go well at the time of hiring. सो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको ये बता सकें कि इंडस्ट्री रेगुलेट कैसे करती है, इंडस्ट्री में जो रिक्रूटर्स बैठे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिक्रूटर्स जो बैठे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आपकी नॉलेज और आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द जॉब. One of the first things that I want to discuss here with all of you fresh graduates is that we do not seek for what knowledge you're bringing or how experienced you are or how much do you know technically about the job. No. Being a fresh pharmacist, being a fresh graduate, we only expect you to have the right confidence and the determination to do the job. And at times we do find people who are confused, who do not even want to be in a particular department, but just because they want to get into the industry, they find it the right uh, you know opportunity for themselves, and after a few months, in fact, they realize that this is not the right job for us. So I have had a chance to interview a few of these such students who were very bright, who knew what they wanted to do, but at the same time, just because the industry was saturated, they could not find the right job. So before anything, it is very essential for you to understand that industry, pharmaceutical industry, है क्या. So we all know that Pakistan being a generic industry, अभी generic industry है क्या? Basically generic industry एक ऐसी industry है, pharmaceutical industry, जहाँ पर हम innovate नहीं करते. Innovate का मतलब we do not make our own products, we do not research on different molecules or products in order to make them. We only copy the innovators that are available worldwide. So Pakistan being a generic industry, we often lack the research and development, the authentic research and development of such products. So, being a generic industry, Pakistan में opportunities बहुत हैं, but at the same time, it is very difficult at times to choose and to realize which department is the right department. सो थोड़ा सा मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ओवरव्यू देती चलूँ. पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में टेक्निकली अगर आप देखें तो the company is divided into two different facilities.
One is the head office, and the other is the manufacturing plant if that company possesses a manufacturing plant. So you will find a lot of businesses in Pakistan which are running at this moment as pharmaceutical companies. But you will find a lot of pharmaceutical firms who do not manufacture themselves, and they're only here to import finished goods from all over the world. सो आपको हर किस्म का बिजनेस यहाँ मिलेगा, आपको इम्पोर्टर्स मिलेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, आपको एपीआई मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, आपको फिनिश प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारे वो लोग हैं जो कि सिर्फ फार्मासिस्ट को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप लोगों का माइंडसेट ये है कि सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ही आपको हायर करेगी, तो प्लीज़ इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र हो जाएँ, बिकॉज़ every point now we require a pharmacist, a fully sound pharmacist. सो हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि यार पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी का कोई स्कोप नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान इज इनरिच्ड विद फार्मास्यूटिकल करियर, एंड आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एपीआई मैन्युफैक्चरर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ एसोसिएटेड है, इवन टॉल मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे आपको। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है? इसमें आपको हर किस्म का बिजनेस बनेगा, बट एट द सेम टाइम you need to realize if you're the right person for the industry, because other than pharmaceutical industry we have clinical pharmacy, we have hospital pharmacy, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, जिसके बारे में शुरू से बहुत कम अवेयरनेस है, and just because of that people think that इस पाथ में कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई करियर नहीं है और आप स्टेगनेंट हो जाएंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ मिस फाबिहा मजहर हैं, शी विल टेल यू इन डिटेल, शी विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल के किस तरीके से एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का स्कोप नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इवन इन अब्रॉड कितना बड़ा है और कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये एज अ करियर पाथ। थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री के बारे में, फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बताती चलूँ। पाकिस्तान के अंदर रफली इस वक्त 700 टू 750 फार्मास्यूटिकल फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसका मतलब ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगभग अराउंड 1200 टू 1500 फार्मासिस्ट हायर्ड हैं, हो रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 750 फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं और एक फर्म के अगर रफली एस्टिमेटेड 1200 फार्मासिस्ट हैं, तो टोटल कितने फार्मासिस्ट हर ईयर जो है वो हायरिंग होती होगी उनकी। बट अगेन द क्वेश्चन एग्जिस्ट दैट कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, किधर क्या काम होता है। सुपरफिशियली आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगी इसके ऊपर, एंड फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी ओपनिंग आवर चैट बॉक्स, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस हमें बता सकते हैं, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं। आफ्टर द सेशंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ योर इश्यूज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो स्टार्टिंग ऑफ विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि it's not just by the way of formulation, which means they're not only manufacturing finished goods, there are APIs, there are companies जो कि सिर्फ बल्क इंपोर्ट करके उनको पैक करती हैं यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारे डिफरेंट आपको फॉर्म्स मिलेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो प्लांट के अंदर लगभग कोई 6 से 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एज